Welcome student in third session from your textbook chapter number 1 matter in our surrounding. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the characteristic of particles of matter. In that we studied three that characteristic. Particles have space between them, particles are continuously moving and particles are attracted to each other. Okay, so today we take classification of matter. So according to that physical states of matter, there is matter exists in three form. Okay, solids, liquids and gases. Okay, so for that example of solid, sugar, sand, minerals, these all are example of solids. In that milk, water, oil, kerosene, petrol, these are liquids. And that air, oxygens, okay, vapor, carbon dioxide, hydrogen, these are what? Gases. Clear? So now first we take this the solid state properties. So what are the properties of solid state? In that previous chapter we studied there is a space between them in particles, they are continuously moving, attraction force. So according to the physical states, they have their arrangement of particles in different form, and that's are called the properties of that state particular. Okay, so first we studied about the properties of solids. They have definite shape and volume. मीन्स इन दैट सॉलिड्स हैव डिफरेंट शेप, मतलब उनका जो शेप रहता है वो फिक्स रहता है और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है. एंड व्हाई इट इज सो? लुक हियर, these are the arrangement of particles in solid. Means there is a particles are closely packed. Okay, there is very less space are there. So it means what? If space is less, then attraction force is more. So that's why these solids have fixed shape because of this arrangement of particles are closely packed to each other in the solids. Okay, and that's why volume is also fixed. Why? Because of the attraction force between the particles. Clear this first properties. Now next, cannot be compressed. Means already these particles are closely to each other. So that's why we can't compress. Compress मतलब आप उसको दबाते हो. So solids are not compressed, but there is exception are there. Okay, for example, have you seen sponge and rubber band? Okay, when we apply that pressure on that, so it change their size, मतलब वो reduce हो जाता है sponge. And rubber band, when we stress that, then it's change their length. But okay, listen that. But when we remove our pressure, then what happen? Then it gets its original shape and size. Sponge gets their original shape and that rubber band is also their original shape. Clear this one? So means compress आप उसको नहीं कर सकते हो. And exception मैंने आपको बता ही दिए. And they are hot. मतलब अगर आप ज्यादा अगर उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगे, it will be break. ओके वो ब्रेक हो जाएंगे, पर उनका शेप और साइज है वो फिक्स रहता है. एंड दैट थर्ड प्रॉपर्टीज आर व्हाट? रिजिड. रिजिड मीन्स हार्डनेस, मतलब वो बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं. अगर आप उसको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो, जैसे आपने कंप्रेस में देखा, सो मतलब वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से वो ब्रेक हो जाएंगे. बट दे आर मीन्स रिजिड. ओके, बट दे आर रिजिड. डू नॉट फ्लो एंड डिफ्यूज मीन्स फ्लोइंग प्रॉपर्टी. फ्लोइंग प्रॉपर्टी मतलब वो इजीली बहते हैं. ओके, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने आप वो जा सकते हैं. नो, मीन्स बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर इज मच लेस गैप. सो दैट्स व्हाई दिस सॉलिड्स पार्टिकल्स, मतलब उनमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती है. सो दैट्स व्हाई वो फ्लो और डिफ्यूजन प्रॉपर्टी उसमें नहीं रहती है. क्लियर दिस वन? नाउ नेक्स्ट, डोंट नीड ए कंटेनर टू होल्ड. अगर आपको ब्रिक्स रखनी है, मतलब ईट रखनी है या आपकी बुक्स रखनी है, तो आप इजीली उसको कहीं पे भी रख सकते हो. वी डोंट नीड द कंटेनर टू होल्ड, मतलब आपको बकेट के अंदर या फिर किसी टंकी के अंदर आपको ऐसे होल्ड करने के लिए कोई भी कंटेनर का यूज नहीं करना पड़ता है. क्लियर? ओके. सेकेंड, द लिक्विड स्टेट प्रॉपर्टीज. इन फर्स्ट, देयर इज फिक्स्ड वॉल्यूम but no fixed shape. It means that
because of the arrangement of particles. Look here, means particles are not close as compared to the solid. Look that above picture. Okay, that in solid particles are tightly packed and closely each other. But here in liquid, particles has gaps between them, and because of this, if a gap is more, then force is less. So that's why their fixed shape is not there. Clear? But volume is fixed. Volume means they are somewhat close is their particles. So that's why its volume is fixed. Means अगर आप ने 1 लीटर मीन्स वाटर 2 अलग अलग कंटेनर्स में लिया है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप जब नेक्स्ट कंटेनर में पोर करोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, 1 लीटर से कुछ कम हो जाता है. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. ओके, बिकॉज ऑफ दैट मीन्स पार्टिकल्स आर क्लोज, सो दैट्स वाई उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. ठीक है. एंड नो फिक्स्ड शेप इज व्हाट मीन्स if we pour means water in that bucket, it takes the shape of that bucket. means आप जो भी particular container में उसको fill करते हो, it takes the shape of that particular container. if you fill that water in glass, takes the shape of glass. okay, in bowl, takes the shape of that bowl. in bottle, it takes the shape of that bottle. clear this one? now next, cannot be compressed. second is what? cannot be compressed, because these particles are close to each other somewhat, so that's why आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, और उसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट कैसा है? लेस है. सो दैट्स व्हाई वी कांट कंप्रेस दिस लिक्विड्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, फ्लो इजीली एंड इजीली डिफ्यूज. इट मीन्स व्हाट? दैट पार्टिकल्स हैज गैप इन बिटवीन देम, सो देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस. So particles are slide over one another, okay, due to slightly weaker force in between them. So particles easily slide करते हैं, means वो easily flow हो सकेंगे. जैसे आपने अगर water for example we pour water on the floor, then what happen? That water start moving, means kinetic energy उसमें हो गई. ठीक है, मतलब moving start कर दिया, क्योंकि आपने देखा liquid में kinetic energy होती है. तो start the moving means वो थोड़ी देर बाद फेल जाता है, डिफ्यूज. सो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज. सो फ्लोइंग एंड डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज आर देयर इन लिक्विड्स. क्लियर? नेक्स्ट, नीड कंटेनर टू होल्ड. जैसे एबो प्रॉपर्टीज में आपने देखा कि अगर आप वाटर को मीन्स जो भी लिक्विड से अगर आप उसको ऐसे ही रख दोगे तो वो क्या हो जाएंगे? स्टार्ट द फ्लोइंग एंड डिफ्यूज, मतलब पूरे से फेल जाते हैं. बिकॉज ऑफ दैट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दे हैव टू स्लाइड वन अनदर. ठीक है, दे हैव टू स्लाइड वन अनदर. So because of that force of attraction is less, so that's why we need to container to hold them. If you want to hold that liquids, milk, water, we need container. Clear this one? Okay, now next, third, the gases state and their properties. So first one, indefinite shape and volume, means ना तो इसमें fixed shape होता है और ना ही volume fixed होता है. अब first we studied that indefinite shape. इनका शेप इसलिए फिक्स नहीं होता है बिकॉज देयर इज ए पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड, सो दैट्स व्हाई देयर शेप इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. एंड वॉल्यूम मीन्स देयर इज ए स्पेस आर नॉट फिक्स्ड इन बिटवीन टू पार्टिकल्स, मतलब जो पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल्स है वो भी फिक्स नहीं है और ना ही उनकी स्पेस फिक्स्ड है, स्पेस इन बिटवीन दैट पार्टिकल. सो दैट्स व्हाई इनडेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. इट टेक्स द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर container or particular things. Takes the example of the different kinds of balloon. Okay, if you pour air, means if you blow air in that balloon, so it takes the shape of and that volume of that particular balloon. Clear this one? So different kind of that balloon and different kind of that shape and volume of that gaseous. Clear? Second, can be compressed easily. Why it is compressed easily? Because there is a particles apart from each other. Okay, arrangement of particles are apart from each other. बहुत दूर रहते हैं, so it can easily reduce their size. मतलब वो easily आप उसको reduce कर सकते हो because less for that force of attraction is there. So that's why we easily reduce that. So can be compressed easily means सबसे ज्यादा compressibility किस में रहती है, कौन से स्टेट में? Only on gaseous state. Clear? And it is beneficial for that. ये property जो है compressed, it is good.
वाई मीन्स इफ यू वॉन्ट टू मीन्स दैट ज्यादा से ज्यादा आपको गैस एक छोटे कंटेनर में फील करनी है, सो इस कंप्रेसिबिलिटी रिड्यूस जो उसका वॉल्यूम हो जाता है उसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा गैस को उसमें फील कर सकते हो. इन दैट आवर हाउस देर इज ए LPG गैस इज देयर इन दैट सिलेंडर, means large quantity of gas we can feel in that. Okay, and next is the oxygen gas supplied to the hospital in cylinder is also in the compressed form. Okay, and compressed natural gas filled in cylinder is being used, there is a increasingly as a fuel to run vehicle like car, buses, because of this compressibility properties. Clear? Now next, flow and diffuse easily. दिस इज सेम लाइक इन दैट लिक्विड. ओके, लिक्विड में फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, मीन्स मूविंग प्रोसेस, डिफ्यूजन इज देयर, बिकॉज ऑफ देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो लेस. ओके, सो हियर इज मोर लेस, मीन्स there is particles are apart from each other. Look here, there is so much gap in between two particles, so that's why we know that if gap is more, then force of attraction is less, so easily diffuse and moving flowing property is there, means kinetic energy is also there. So take the example, if you want to means that burn that agarbatti in one corner, okay, of the room, and that whole the house have the fragrance of that agarbatti. Okay, means वो पूरे रूम में फैल जाती है because of that this arrangement of particles. Clear this one? Next, नीड कंटेनर टू होल्ड, मीन्स आप गैस को ऐसे ही नहीं रख सकते हो. ओके, क्योंकि उसमें ना तो आप गैस को देख सकते हो, ठीक है, वी कैन फील ओनली एयर, मीन्स गैस भी, एयर भी क्या, इट इज वन काइंड ऑफ दैट गैस. सो आप उसको फील कर सकते हो, स्मेलिंग कर सकते हो, मीन्स फ्रेग्रेंस आपने देखा, फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम, फ्रेग्रेंस ऑफ दैट फूड आइटम, ठीक है. सो वी कैन फील दैट बट वी कांट होल्ड दैट, सो वी नीड द कंटेनर टू होल्ड द gases. Clear this one? Now revision. So what we know that classification of matter exists in that on the physical state, matter exists in three states: solid, liquids and gas. Sugar, example of that solid. Milk, example of liquid. Air, example of gas. In there means there is a properties are there. So arrangement of that particles in the different form, there is a properties are also changed because of this arrangement of particles. So definite shape and volume in that solid, because that they are fixed shape, particles की shape भी fix है, volume भी fix है, मतलब उनकी space भी fix रहती है. So that's why definite shape and volume, these are just opposite to the gas. ठीक है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मीन्स उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज ए पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल्स एंड दैट स्पेस आर फिक्स्ड. क्लियर? सो दे आर हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड रहते. इफ यू प्रोवाइड मीन्स मोर प्रेशर देन इट विल बी ब्रेक बट नॉट चेंज देयर शेप. ओके, एंड डू नॉट फ्लो एंड डिफ्यूज बिकॉज देयर इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो more. If less is space, then force of attraction is more, so that's why they do not have the flowing property and diffusion. Next, don't need a container to hold because fixed position of particle and space is also fixed, so that's why it do not need the container to hold that. And second, the liquid state properties, arrangement of particles are also different as compared to the solids. So fixed volume but no fixed shape, मतलब इनका जो space है, they are means slightly one another, means they have to move, and no fixed shape because position of that particles are not fixed, so that's why fixed volume but no fixed shape, cannot be compressed because there is a close to each other that particle. Okay, so that's why it cannot be reduced. And flowing and easily diffuse properties are there because there is a less attraction force and particle are slide one another, so that's why flowing properties is also there. And that need container to hold them because of their arrangement of particles, they start the moving, so that's why we need the container to hold. Third, the gaseous state properties, here is so much difference are there in their arrangement of that particles. Indefinite shape and volume, ना तो इसमें फिक्स पोजिशन रहती है पार्टिकल की और ना ही स्पेस फिक्स रहता है, so that's why indefinite shape and volume.
Next, can be compressed easily because of their particles are apart from each other. So that's why we can easily reduce their size, means because of this compressibility. And flowing and diffusion property is also there because there is arrangement of particles. They have to flow easily and need container to hold them of that gases. Clear? Thank you.